Hello and welcome everyone. Welcome to the Atulya series, that is the swift coverage for prelims 2021. This is the best way for the revision of your prelims syllabus. Today we will be discussing about oceanography, and it is the part 2 of oceanography in our lecture series. So let's start our discussion. Till now we had discussed about the structure of the ocean. We had discussed about various features related to ocean. We have discussed about features like temperature, density and salinity of ocean water, or inca distribution vertically as well as horizontally. These things we have discussed in our previous lecture. In this we are going to discuss a few other elements of oceanography. We will talk about some of the ocean resources और साथ में ही बात करेंगे related to ocean deposits. Before that, let's talk about major straits. So the first thing that we are going to discuss is about major strait. This is the factual portion. So let's first start. What is the meaning of strait? Strait basically is a narrow passage of water which connects two seas or other large water bodies. So strait in a way is a narrow passage. कैसा passage है? It is a passage of water. So on one hand we have got a big water body, on other hand we have got big water body, and there is this connecting passage, and remaining is the, so this is the strait, this is the water body 1, water body 2, and this connecting passage is strait. There are some important straits which are given in the table, which you can read from the PDF itself or the PPT PDF which will be shared with you. So number 1 is the Strait of Malacca. Let me talk about this Strait of Malacca. It is important. It is a funnel shaped strait which is 800 kilometers long, and it connects South China Sea with Andaman Sea. तो अगर आप मैप में देखोगे बे ऑफ बंगाल रीजन में जहाँ अंडमान सी है, उसको कनेक्ट करती है ये साउथ चाइना सी के साथ में. सो साउथ चाइना सी इज अ मार्जिनल वाटर बॉडी, यानी कि मार्जिनल वाटर बॉडी कहाँ की? पैसिफिक ओशन की. अंडमान सी इज द मार्जिनल वाटर बॉडी ऑफ Indian Ocean. Other strait is the Bass Strait. So Bass Strait is the widest strait. It is 240 kilometers long. And where it is located? It is located in the southeastern part of Australia. So it connects, the Bass Strait connects the Tasman Sea and South Sea in the Australia. Another strait is the Bosphorus Strait. This strait connects the Black Sea with the Sea of Marmara. Alright, so other major straits are given here. One is the Park Strait which connects Park Bay and Bay of Bengal. किसके बीच में? Between India and Sri Lanka. Sunda Strait, it connects Java Sea with Indian Ocean. And where it is located? In Indonesia. Similarly, we have got Yucatan Strait. Yucatan Strait is a strait which connects Gulf of Mexico with the Caribbean Sea. So Mexico, Cuba is the location. Next is Messina Strait. Messina Strait lies in the Mediterranean Sea. So it is there in the Sicily island of Italy. Otranto Strait, it connects Adriatic Sea and Ionian Sea. It is in the Italy-Albania region. Bab al-Mandeb Strait, it connects Red Sea and Gulf of Aden. It is in the Yemen and Djibouti region. Similarly, we have got the Cook Strait in the South Pacific Ocean. It is located in the New Zealand. Likewise, Mozambique Strait, North Channel. So this is a long list of straits. Some of the straits, important straits which have been in news include like the Bass Strait, Bering Strait, Bosphorus Strait, Dardanelles Strait. So it connects Marmara Sea and the Aegean Sea. Apart from that, Davis Strait which connects Baffin Bay and Atlantic Ocean. It is at the part of Greenland and Canada region. We have got Strait of Hormuz, connects the Gulf of Persia with Gulf of Oman. Where it is located? Oman and Iran region. Hudson Strait, it connects Gulf of Hudson with Atlantic Ocean in Canada region. So these are the major straits. This list is an elongated one. I would rather ask you
to go through the list and try to memorize, look at the location of these straits. जब आप इसको globally ocean और marginal water bodies sea के map के साथ compare करेंगे and you will see, तो आप उनको easily locate कर पाएंगे. This will be helpful for you. So this is the information about the straits. So major straits of the world are being included here, right? So let's start to see what are the ocean deposits. So basically ocean deposits, as the name suggests, these are the deposits which are being sourced from somewhere else, but they are deposited to a particular location. तो deposit itself means कि वो कहीं पर आकर इकट्ठे हुए हैं. It may be from ocean itself or maybe from continent. So there may be different types of deposits. Number one is the terrigenous deposits. Basically, terrigenous deposits are sourced from the continental origin. They are the result of weathering and erosion. So initially, coarse grains are formed and ultimately they reach to the sea and they get deposited in the sea. Majorly, factors which are responsible for bringing the coastal sediments or coastal deposits in ocean include the river, क्योंकि जहां पर रिवर होगी, रिवर का माउथ कहां जाकर मिलता है? ओशन में. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोस्टल रीजन से कोस्टल रीजन में सी वेव्स जो है, so sea waves in the coastal region will be responsible for bringing deposits in the coastal area. Apart from that, some are being deposited from the winds in the coastal area. So wind can be a part, can have an important role as a factor for the ocean deposits. So they include gravel, silt, clay, mud, etc. So mud of different type: blue mud, green mud, red mud, etc. Another deposit could be volcanic deposits. So volcanic deposits simply means कि जो volcanic origin है, जिनका volcano की वजह से जो deposit हुआ है, be it the lava or other fragmented material which we call tephra, which includes a pyroclastic material. So ये सब volcanic deposits में आ गए. Next type of deposits include organic deposit. As the name suggests, they have their origin, they have carbon compound, plus what we can say, they are the part of life forms. Once they would have been alive as the form of a life. So skeleton of marine organism is included into it. It includes two type of matter. One is neritic matter, another one is the pelagic matter. So neritic matter includes the skeletons of organisms. Pelagic matter is the remains of algae found in the liquid mud, और इसको बोलते हैं ooze. This name you have to remember. What is ooze? Ooze is the remains of algae which are found in the liquid mud. तो जो muddy part है ocean का, वहाँ पर algae के remains जो found होते हैं उसको हम बोलते हैं ooze. Otherwise जो neritic matter है, जो sea में skeleton, sea organism के skeleton से मिलके बनता है, those deposits are known as the neritic matter. Further, this ooze, that is pelagic matter, can be divided into two categories. One is calcareous ooze, another one is siliceous ooze. So you have to remember this, that ooze can be divided into two parts. One is calcareous ooze, which has the presence of calcium. Another one is siliceous ooze, which has the presence of silica. So let's see what are they. So calcareous ooze basically contains lime. So they have the presence of lime. It can be divided into two types. One is pteropod ooze, which are formed of floating shells of mollusks. Please remember this. The pteropod ooze, which are formed by the floating shells of mollusks. Next is globigerina ooze. Globigerina ooze are formed from the shells of foraminifera organism.
तो आपको नाम याद रख सकते हैं आप, फोरामिनिफेरा के शेल से बनता है ग्लोबिजर्ना ooze. They contain 64% of calcium, 1.6% of silica, and 3.3% of other minerals. Usually they are found in the tropics and temperate zone of Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Eastern Pacific Ocean. This is about the ooze, calcareous ooze. Next is siliceous ooze. They derive from the group of protozoa and other benthic animals like sponges. The main difference between calcareous ooze and the siliceous ooze is that there is a difference between them with respect to their chemical property. Calcareous ooze has the presence of lime, and we know that lime gets dissolved in a acidic medium. तो जैसे ही pH वाटर का, सी वाटर का towards acidic convert होता है, तो there is a possibility जहाँ पर lime convert हो जाता है. तो there is a condition कि अगर saline water जो सी वाटर है at certain depth, वहाँ पर lime जो है it does not get dissolved, but after beyond certain depth there is a possibility जहाँ पर जो कैल्सियस पार्ट है, कैल्सियस लाइम है, वो डिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाता है. सो दैट डेप्थ इज द ओनली लिमिट जहां तक आपको कैल्सियस ooze मिलेंगे. सो इफ यू सी, लेट्स से इफ दिस इज द वर्टिकल ओशन, सो it is only this part where you can find the calcareous ooze, and siliceous ooze can be found at all the other places. So these do not dissolve unlike calcareous ooze. They are found in both warm and cold water, even at great depth. कैल्सियस ooze की एक लिमिटेशन है कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में ज़्यादा डेप्थ में, और सिलिशियस ooze डिजॉल्व नहीं होते. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस. वन थिंग टू बी नोटेड डाउन हियर. Moving ahead, let's see what this diagram is trying to tell us. This diagram is simply telling us that it is a marking for continental shelf, then the pelagic sediments और डीप सेडिमेंट. सो ओपन सी में जो सेडिमेंट्स है दे आर पेलाजिक. तो अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टली ओशन को डिवाइड करना चाहते हैं तो इट कुड बी लाइक कॉन्टिनेंटल पार्ट, राइट, शैलो वाटर जहां पर आपको देखने को मिलेगा, देन डीप पार्ट. डीप पार्ट को हम पेलाजिक भी पार्ट बोलते हैं, राइट. तो दिस इज द डीप पार्ट. नाउ हियर दिस इज इनलैंड एंड इट इज अ लगून. लगून इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर मरीन वाटर तो इंक्लूड कर गया, बट देयर इज दिस बैरियर. तो ये मेन लैंड का पार्ट है बट मेन ओशन का पार्ट नहीं. हेयर यू कैन गेट बायोजेनस कोरल प्लस सम microscopic debris, right. Then in ocean, as you move forward, then you can get shelf where you get lithogenous sediments. Lithogenous sediments means sediments which are being derived from the continent. तो continent से जो sediment बन के आए हैं, because ये land के बहुत पास है, तो यहाँ पर इनके इरोजन की एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हुई होगी, तो इनका जो साइज है इट वुड बी लार्ज. सो दे आर कोर्स. द वे इट मूव अवे, वेव के साथ बार बार टकरा कर पार्टिकल्स धीरे धीरे फाइन होते जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं. तो नियरेस्ट जोन में जो पार्टिकल मिलेंगे दे आर कोर्स. फिर इन पार्टिकल के ड्रैग होने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सबमरीन कैनियन बन जाए. सबमरीन कैनियन क्यों बनती है? क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं एंड दे ट्राई टू इरोड दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ इटसेल्फ. और जो करंट ऐसे सबमरीन एरिया में जनरेट होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्बिडिटी करंट. टर्बिडिटी करंट्स ये वो करंट है जो ओशन के सरफेस के अंदर, यानी कि सी वाटर के अंदर वाटर जो वर्ल्ड और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इरोजन की एक्टिविटी होती है. तो वहां पर जो डिपॉजिट जनरेट होते हैं दे कैन क्रिएट दी सबमरीन कैनियन. विंड ब्लोन डस्ट इट ऑल्सो गेट्स इनटू द पेलाजिक रीजन. A lot of debris, maybe from volcanic or wind, etc., they also enter here. Pelagic clays which are fine. तो यहाँ पर जो क्ले है, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से काफी दूर है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग हेयर. तो यहाँ पर जो डस्ट पहुँचेगी दैट विल बी फाइन इन नेचर, कोर्स नहीं होगी. जब हम सी के सेंटर में पहुँचते हैं तो वी कैन ऑल्सो फाइंड डिपॉजिट्स लाइक मैग्नीज नोड्यूल. इनको कॉमनली बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स.
polymetallic nodules or cobalt crust. Basically, they are originated from the volcanic activities at the sea floor. तो sea floor में we know कि lava magma इकट्ठा होता रहता है and that can lead to the formation of different metallic nodules. तो यहाँ पर sea floor में deeper level पर there are so many polymetallic nodules. These are mineral rich sources. इंडिया भी इनकी माइनिंग के लिए इंडिया वांट्स कि इनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सके. इनकी माइनिंग अगर किसी कंट्री को करनी होती है सो दैट कंट्री नीड्स अ परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स द परमिशन कि आप माइनिंग कर सकते हैं अंडरग्राउंड सी में या नहीं. तो डीप सी में माइनिंग अगर करनी है तो यू नीड टू हैव अ परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. ये बनी है यूएन क्लॉज के अंडर. यूएन क्लॉज मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी. तो इस लॉज ऑफ द सी कन्वेंशन के बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो परमिशन देती है कि कहाँ पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो. बेस्ड अपॉन दिस इंडिया हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द परमिट कि इंडिया इंडियन ओशन रीजन में डीप सी माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि दे कैन एक्सट्रैक्ट दी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फॉर इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज. दीज थिंग्स यू कैन रिमेंबर. This CCD is basically telling us what is the limit of calcareous ooze. So calcareous ooze will be only found here between this range. This CCD means calcium compensation depth, यानी कि इस डेप्थ के बियॉन्ड कैल्शियम कैन नॉट सर्वाइव, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा. वेयर? इन दी सी वाटर. सो दिस इज द CCD beyond which you can find the siliceous ooze. ये CCD से ऊपर है, that is why we are having here the calcareous ooze. This is the mid-oceanic ridge. So ocean is a rich composition. Ocean has a rich composition and rich deposition of minerals. वो variety of factors से आते हैं. We have seen some factors कि biological है, some factors जो कि continental है, some factors जो कि volcanic activities की वजह से आते हैं. So this chart basically tells about how and where the ocean resources and deposits are existing. एक बार brief idea here. It is a shallow zone. It is the pelagic zone जो deep वाला part है. अगर आप ocean को vertically देखना चाहते हैं, if you want to see ocean vertically, so ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे से, शैलो पार्ट के आगे से जो पोर्शन है, इट इज नोन एज पेलाजिक. जब हम इस डेप्थ में नीचे जाते हैं तो डीपर पार्ट कहलाता है बेंथिक. बेंथिक कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू डिपेंडिंग अपॉन इट साइड लाइक एपीबेंथिक, मेसोबेंथिक. तो इनके डेप्थ में वो आपको जाने की जरूरत नहीं है. ऑल यू कैन रिमेंबर जो डीपर पार्ट है ओशन का, दैट इज बेंथिक. अगर ओशन बहुत डीप है और साथ में यहाँ पर देयर आर ट्रेंचेस या डीप ट्रेंचेस है तो उन जोन को क्या बोलते हैं आप? हडाल. सो हडाल जोन आर ऑल्सो देयर. तो जो ऑर्गेनिज्म जिस जोन को बिलोंग करते होंगे उस ऑर्गेनिज्म को हम उस कैटेगरी में ऐड करते हैं, या फिर जो डिपॉजिट जिस जोन को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको उस कैटेगरी में ऐड करके चलते हैं. ऑलराइट. कॉन्टिनेंट की तरफ जो आपके डिपॉजिट्स हैं दे आर लिथोजेनस. जो बायोलॉजिकली डिपॉजिटेड हैं यानी कि मिड ओशन में दे आर लार्जली बायोजेनस और वॉल्केनिक. Now let's move further. Having seen the deposits, it is the time to see कि ocean resources, how we can see them. So fishing zones of the world, उनको एक बार देखते हैं. So a very large share of world's annual income come from the fisheries. So 90% of the world's total fish catches, right, include the fin fishes. Remaining 10% is by whales, lobsters, mollusks, etc. invertebrate animals.
तो ये आपको एक आइडिया रखना है कि जो भी फिशेस हैं जो नॉर्मली आप देखते हैं जिनके फिन्स होते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द कैच. सम ऑफ द रीजन्स जहां पर आपको फिश कैच ज़्यादा मिलेंगे, लेट मी टेल यू दिस एंड देन आई विल टेल यू व्हाई दे आर लोकेटेड एट दोज प्लेसेस. तो उसकी कुछ कंडीशंस देखेंगे कहाँ पर फिश ग्राउंड्स फेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं. सो वन इज द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन. सो दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम एल्यूशियन टू रशिया एंड चाइना. सो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक के पार्ट है. इट इंक्लूड साउथ कोरिया, जापान ऑल्सो, एंड सदर्न रीचेस ऑफ फिलीपींस. Most important catch here is salmon, crab, herring, pollock, halibut and cod. आप इनके नाम को बस एक ऑर्डर को दिमाग में रख सकते हैं. What are these names? But regions you can remember कि नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक है. नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में you know कि एल्यूशियन जो हमने रशियन रीजन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एटसेट्रा. देन नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, ये भी एक अनदर रीजन है. दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम यूरोपियन कोस्ट from Iceland to Portugal. So northeast part में है ये. Here it is herring and haddock are the most important catches in this region. Next is the Northwest Atlantic region. Northwest Atlantic region include the New England region of USA, then New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland of Canada, Grand Bank, George Bank, etc. are also included. Cod is the major catch here. Which fish is major catch? Cod. कहाँ पर? In the Northwest Atlantic region. उसमें कुछ particular specific areas है like New England, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Grand Bank and George Bank. ये region है. Apart from that, another region is Southeast Pacific region. Southeast Pacific region has the location like Peruvian and Chilean coast. नेक्स्ट रीजन इज दी वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक रीजन. वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक रीजन में आपको मिलेगा फिलीपींस से लेकर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक. सो मेजर कैचेस आर मैकरल, ट्यूना, म्यूले, रेड फिश, ऑयस्टर, क्रैब एटसेट्रा. सो दीज आर दी लोकेशंस और यहाँ पर इनके नाम है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशंस फॉर अ फिशिंग ग्राउंड. सो all right, this is North America, this is South America. So to identify कहाँ पर आपको fish catch strong मिलेगा, it needs fish do feed upon planktons. Mainly it includes zooplankton and phytoplankton. These are very small floating organisms, both flora and fauna. All right, so these are those organisms जिनके ऊपर fish feed करती है. तो these presence of these planktons is essential. Where we can find the plankton? Planktons are found at the locations where there is warm plus cold currents are mixing. तो जहां पर warm and cold current mix होंगे, there you can find these planktons. You can find the planktons जहां पर ocean में nutrient आ रहा होगा. Nutrient is entering to the ocean, चाहे ये लैंड के थ्रू आ रहा हो या फिर ये ओशन के लोअर लेयर से ऊपर लेयर में आ रहा हो. ओशन वाटर में एक इंटरमिक्सिंग चलती रहती है, दैट इज नोन एज अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग. व्हेन वाटर मूव्स अपवर्ड इट इज नोन एज अपवेलिंग. तो अपवेलिंग होते हुए नीचे के जो न्यूट्रिएंट है वाटर ऊपर लेकर आ जाता है. डाउनवेलिंग जो डेंस वाटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. कूल एंड डेंस वाटर, दैट इज डाउनवेलिंग. सो जोन्स ऑफ अपवेलिंग हैज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पर वी गेट द प्लैंक्टन्स.
सो दीज आर द लोकेशन जहां पर आपको प्लैंकटन देखने को मिलेगा. इसके अलावा फिशरीज अगर वहां पर कोस्ट थोड़ी कर्व्ड है, वेवी है, so it provides the opportunity for human beings to carry out the fisheries. That is why the coast, the areas where we have talked about, let's say this region, we have talked about Grand Bank, Newfoundland, New England, Nova Scotia. This is the region where we have got the presence of warm Gulf Stream and cold currents like Labrador current. So यहाँ पर mixing होती है currents की, we get these zones. Some zones have the upwelling zone. Even in case of India, we have got in the western coast India, we have got several locations जहाँ पर upwelling होती है. Due to upwelling, there is the presence of nutrients for fish. और वहाँ पर in those presence of fish, what we get the presence of fisheries also. So that is why, let's get back to our slides. That is why these are the regions जहाँ पर आपको you find the Great Banks. These are the regions जहाँ पर आपको fish catches strong मिलते हैं. These are the fish development zones. क्योंकि यहाँ पर fish ज़्यादा availability में मिलते हैं. That is why human occupation here is also related to the fisheries. So fishing zone, these dark blue patches, fishing zone. This is the fishing zone. This is another fishing zone. Some fishing zones are there in the Southern Ocean also. यहाँ पर normally whale catch strong है. Chilean and Peruvian zone. The Florida Mexico region. Here Aleutian part. Then in the Northeast Atlantic, this is the region where the Gulf Stream and the cold current meet. So these are the different zones where you have the fishing areas. In case of India, this zone here, you can get the fishing zones. So basically this map talks about the fishing zones. So it relates, it tells us that there are rivers also. Some of the river locations do have fishing zones. There are intertidal zones marked here in this map, but what is our focus? Our focus is simply to identify where are the important fishing zones, right? So that we have to see. Moving further, we have to see the different zones of the sea with respect to its commercial और international relationship. तो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में जो सी के जो बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री, उसका अगर डिस्प्यूट हो तो कैसे रिजॉल्व होता है, दैट वी हैव टू सी. ग्लोबली अगर बात करते हैं ओशन की, तो ओशन इज अ ग्लोबल कॉमन. ग्लोबल कॉमन का मतलब है कि सब इसके ऊपर सबका राइट है. तो अगर सबका राइट है तो एवरीबडी शुड नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट. उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि ताकि वो सबके लिए इक्वली यूजफुल रहे. सो दैट वी हैव टू मेंटेन. तो नॉट एवरी पार्ट ऑफ द ओशन इज बीइंग कंसिडर्ड एज द ग्लोबल कॉमन. कुछ पार्ट आपकी कंट्री के अंडर आता है. दैट पार्ट इज कंसिडर्ड एज द पोर्शन ऑफ द कंट्री. सो यूएन क्लॉज बेसिकली टॉक्स अबाउट द जोन्स ऑफ द सी जो आपके लिए आपकी कंट्री के अंदर दे हैव सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज. अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज देयर इज अ बेसलाइन. बेसलाइन के आगे इफ यू मूव टू 12 nautical miles, 1 nautical mile is equals to 1852 meters. This you have to keep in your mind. Baseline से 12 nautical miles तक आपका territorial sea है. It is the territory of the country. तो उसका coastal water है. यहाँ here sovereignty of that country extends. आपकी एयर स्पेस भी यहाँ पर है, आपका वाटर भी कंट्री के अंदर है, सी बेड पर भी कंट्री का राइट है, सी के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर भी कंट्री का राइट है. एंड कंट्री कैन ओनली अलाउ द इनोसेंट पैसेज, कि अगर कोई दूसरी कंट्री का शिप है और वो इनोसेंट है, यानी कि इट हैज टू टेक द रूट, तो वो बिना उस कंट्री के, जिस कंट्री का ये वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है, उस कंट्री के राइट के बिना नहीं जा सकता उससे. तो दिस इज कंसिडर्ड एज द सोवरेन टेरिटरी 12 nautical miles तक. 12 nautical miles से नेक्स्ट 12 nautical miles को बोलते हैं contiguous zone. Here country can apply some of the laws, not every law.
फिर up to 200 nautical miles तक the zone is known as exclusive economic zone. Here country have only the sovereign rights with respect to economic and commercial activities like fisheries से related, या फिर अगर कुछ mines and minerals excavate करने हैं तो उन resources के respect में country can do. So here the sovereign rights is mainly related to exploiting the resources. So this mainly extends to the entire water column and the continental shelf or continental slope जो भी इसके नीचे rise है उसके ऊपर. Beyond 200 nautical miles it lies the high sea. High sea is not under any national jurisdiction. तो किसी भी country के national jurisdiction में नहीं आएगा high sea. तो नॉर्मली वाई दीज बाउंड्रीज आर सेटल्ड कि अगर जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं दो कंट्री के बीच में विद रिस्पेक्ट टू ओशन डिपॉजिट, ओशन रिसोर्स, तो उन इश्यूज को हैंडल किया जा सके. फॉर दिस वी हैव गॉट दीज बाउंड्रीज अंडर यूएन क्लॉज. तो जो बात की थी हमने आईएसए वाली, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस जोन कि जहां पर आपको मेटेलिक मिनरल्स को, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को माइन करने की परमिशन मिली है. कुछ जोन में आपको परमिशन यहाँ पर भी मिल जाती है, वहां पर आपको अगेन इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ही वो परमिशन देती है कि आप कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द यूएन क्लॉज. यूएन क्लॉज टॉक्स अबाउट द बाउंड्री एंड द जोनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स थ्रू विच अ नेशन कैन आइडेंटिफाई कि उनका एक्चुअल में कितने दूरी तक दे हैव द राइट्स ऑन द सोवरेन राइट्स ऑन द ओशन वाटर एंड ओशन रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज द topic coral reefs. This is the important topic. I would suggest that you try to learn more of this topic because it is one of the important topic. Here it is the what are coral. Coral simply means accumulated and compacted skeleton of lime secreting organism जिनको coral polyps बोलते हैं. Basically coral polyps इनके skeleton इकट्ठे होते जाते हैं and on those skeleton there are so many other species which survive. Most important is the algae species. तो algae species इनके साथ attach हो जाते हैं and these algae species have the variety of color. So that is why we find the coral reefs as colorful colonies. Other than this algae species, lot of other fish species and marine organisms, they do depend upon the coral reefs. Coral reefs generally 25 degrees north to 25 degrees south तक मिलते हैं. So they are in the warm water. To have coral reefs there are some prerequisite condition. वो क्या क्या condition है? Let's try to see. That there should be high mean annual temperature that is beyond 20 to 21 degree centigrade for growth. इतना टेम्परेचर इन्हें चाहिए, यानी कि दे रिक्वायर वार्म वाटर. ऐसा नहीं है दे कैन नॉट रिक्वायर इन द कोल्ड वाटर. देयर आर सम coral reefs which are found in the cold water or temperate water also, but they are not many. So major portion you can find in the temperate water, tropical water. They do not survive in deep water, यानी कि they rarely survive more than 250 feet. Basically you can expect only up to 200 meters that you can find the coral reefs, but beyond that you won't find the coral reefs. They need light to be there क्योंकि यहाँ पर एल्गे भी है. तो फोटिक जोन इज द जोन जहाँ पर आपको कोरल रीफ मिलेगी. सो ऑक्सीजन एंड सनलाइट, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. सो फोटिक जोन इज देयर. वाटर जहाँ पर जो मरीन वाटर है, जो मरीन एरिया है, वहाँ पर इट हैज़ टू बी सेडिमेंट फ्री. तो इस लॉजिक के हिसाब से कोरल रीफ्स कहाँ होंगी? जहाँ पर रिवर माउथ है, जो ओशन में रिवर जाके मिल रही है. दीज आर नॉट द लोकेशन जहाँ पर आपको कोरल रीफ नहीं मिलेगी. दीज आर दी लोकेशंस आपको कोरल रीफ वहाँ पर एब्सेंट होगी. क्यों? क्योंकि रिवर अपने वाटर के साथ में सेडिमेंट लाती है. अगर सेडिमेंट होगा तो कोरल में जो पोर्स हैं दे विल बी फिल्ड एंड अल्टीमेटली वहाँ पर कॉलोनी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी. सो सेडिमेंट फ्री वाटर इज रिक्वायर्ड. तो जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा वेव्स एंड करंट से परेशान नहीं होता तो वहाँ पर यू कैन फाइंड द कोरल रीफ्स. अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि पूरा फ्रेश वाटर कोरल रीफ के लिए अच्छा है. फ्रेश वाटर इज नॉट हेल्दी, दे वांट द सलाइन वाटर. तो एक सैलिनिटी का मिक्स भी होना चाहिए. At the same time, salinity should not be very high for the coral reef. So they need to have the optimum salinity, neither fresh nor very high saline. Apart from that, ocean currents and waves, basically if they are present, but they are not very strong.
then they are helpful because ocean wave or current जो है they bring the nutrient for the coral reefs or coral colonies. So basically these are the important factors. Coral reefs are such important for ocean ecosystem that they are often termed as the rainforests of the ocean. Rainforests of the ocean. Apart from this, one thing I would like to add here is that जब coral reef की बात हो रही है, so coral reefs में अभी they are facing challenge of climate change. Climate change की वजह से क्या हो रहा है? नंबर वन, एक तो ओशन में एसिडिटी इंक्रीज हो रही है. ओशन की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो ये जो कोरल पॉलिप्स है इनका जो स्केलेटन है इट इज लाइम रिच, एंड यू नो कि एसिडिटी इंक्रीज होगी तो पीएच लेवल के चेंज होने की वजह से जो लाइम कंपोनेंट है वो डिजोल्व होने लगेगा. सो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स नेगेटिवली. फर्दर टेम्परेचर राइज का भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, कोरल रीफ्स आर फेसिंग चैलेंज. आइदर दे आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ ब्लीचिंग. ब्लीचिंग का मतलब है उनका कलर उड़ जाना, जो एल्गी जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाना. एक है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कि अगर पीएच लेवल बढ़ गया, ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो गई, सो इन दैट केस अगर एसिडिफिकेशन है तो वहां पर कोरल स्ट्रक्चर है वो भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है. दीज आर द मेजर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स क्लाइमेट चेंज की वजह से. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर चैलेंजेस कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से कोरल रीफ्स को भी काफी डैमेज पहुंचा है. फर्दर कोरल रीफ्स दे डू आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स. यहाँ पर दे प्रोवाइड लॉट ऑफ फूड, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन यहाँ पर होता है, तो फिश दे एक्ट एज द मेजर फिश ग्राउंड. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज वाई दे वर कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे रिचनेस है एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों एग्जिस्ट करती है वेयर इन दी कोरल रीफ्स. Now let's just try to see what are the different types of reefs. One is the fringing reef. So basically fringing reef का मतलब क्या है कि एक fringing reef is one of the most common type of reef. So what it happens, it forms a kind of reef, a kind of fringe, और उस fringe पर you can find lot of coral polyps और उनके साथ साथ जो एल्गी है वो अपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करती है. सो दिस एंटायर पोर्शन along the coast, it is the fringing reef. So basically they create border along the shoreline. तो shoreline के साथ साथ border को create कर देते हैं. shoreline के ऊपर they create a border that is known as the fringing reef. Then there is the barrier reef. barrier reef क्या करती है, जो fringing reef जहाँ पर establish हुई है तो धीरे धीरे कोरल रीफ अपने साइज को इंक्रीज करती रहती है, हाइट को. सो अल्टीमेटली ये सी सरफेस के ऊपर तक उठ के आ जाता है यहाँ पर, एंड दे क्रिएट अ वर्चुअल बैरियर. तो इसके अंदर जो पार्ट रह जाता है दैट रिमेन्स एज अ लगून, और इस बैरियर से ये बहुत ज़्यादा ओशन के इस पार्ट को और इस पार्ट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती है. दैट इज वाई इट इज नोन एज द बैरियर. इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द इनलैंड वाटर and the open sea water. Next type is the atolls. Atolls कब होते हैं, जबकि let's say imagine, you may imagine a condition that this is the ocean, here it is a small continental uplift or a small ocean crust uplift. यहाँ पर धीरे धीरे polyps आना शुरू होते हैं, जनरेट होना शुरू होते हैं धीरे धीरे over a period of time they get deposited and ultimately ये सी के सरफेस से ऊपर उठ के आ जाते हैं. ये सारे क्या है, these are corals. और ये जो सरफेस के ऊपर उठ के आए हैं तो that will be known as atolls. तो it is an island type of structure created by the coral reefs that is known as the atoll. तो atolls over a period of time, तो volcanic पीक या फिर सी माउंट के ऊपर, सी माउंट हमने बात की थी, सी माउंट आदि स्मॉल माउंटेन्स अंडर द सी, दे मे बी स्मॉल दे मे बी लार्ज. तो वहां पर अगर रीफ धीरे धीरे बढ़ती है और अपने साइज में बढ़ते बढ़ते ये सी लेवल के सरफेस से ऊपर उठ जाती है, देन इट इज नोन एज द अटॉल्स. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
Some important coral reefs. One is the Great Barrier Reef. As the name suggests, it is the greatest here. It is found in the coast of Queensland in Australia. So basically it has 2900 individual reefs and 900 islands stretching over it. It is 2300 kilometers long. So ultimately it is the largest reef structure in the world, the Great Barrier Reef of Australia. Then is the Belize Barrier Reef. It is the coastal area of Belize where you can have this reef structure. So here Barrier Reef basically have offshore atolls, several sand cays are there, mangrove forests are there, coastal lagoons are also formed here at these locations. Another is the Red Sea Reef. Red Sea Reef is at the coast of Red Sea. So basically this is in the Indian Ocean. Next is Pulle Reef. Pulle Reef is found in the coast of Florida, USA. So these are the important locations of coral reefs. So one is this Australian region, when you have this location as well. You have Caribbean region also, in Pacific also you have got. Now coral reef regions we have talked about, but the which region has seen the maximum decline? Let's talk about this. The decline is 24% in the Pacific region. Similarly, 24% is in the Australian region, 12.3% in the Caribbean region, 18% in the East Asian region. तो ये this is talking about the coral reef and their decline. इंडिया की बात करें so where we can get the coral reefs, Andaman and Nicobar Island में you will find the coral reef, Gulf of Mannar region में you will find coral reefs, लक्षद्वीप में you can find the coral reefs. यहाँ पर आपको reef कैसी मिलेगी? अटॉल टाइप की. Malvan region in Maharashtra you find the coral reef, Gulf of Kutch you find the coral reef. These are the regions in India where you find the coral reefs. अब कोरल रीफ के बारे में देखते हैं, वाई दे आर फेसिंग द थ्रेट. 1% of the reef is basically critically endangered, 3% is endangered, 23% is vulnerable and 20% is near threatened and 34% is least concerned. ये जो terms हैं these are taken from the IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN ये एक बुक एक लिस्ट लॉन्च करती है, रेड लिस्ट. बेसिकली जो टॉक करती है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पीशीज और उनका क्या स्टेटस है, क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है. ये डिग्री ऑफ थ्रेट है जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज फॉलो करती है या जो फेस करती है. सो 2018 के हिसाब से 1% इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड अप टू 3% इज एंडेंजर्ड. तो दिस शोज कि कोरल रीफ्स आर फेसिंग द ब्रंट. रीफ स्ट्रक्चर और रीफ सिस्टम आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ओशन इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं. लेट्स सी सम स्टैट्स, क्या रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कोरल रीफ के बारे में. सो द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड which was put forward by Global Coral Monitoring Network. So basically it says that since 2010 तब से लेकर अब तक 14% of the coral reefs have been lost. हम उनको खो चुके हैं. Now this is the fact given by this sixth status report of the corals. Now let's talk about what is this organization, Global Coral Reef Monitoring Network. बिकॉज क्वेश्चन ऑन दिस नेटवर्क कैन ऑल्सो बी आस्क्ड बाय यूपीएससी. ये थोड़ा सा एनवायरमेंट की तरफ कनेक्टेड पोर्शन है, तो जब हम इकोलॉजी कनेक्ट करेंगे तो वहां पर हम कोरल रीफ का पोर्शन नहीं करेंगे. दैट इज वाई वी आर कवरिंग इट हेयर. इकोलॉजी में वी विल बी जस्ट टचिंग इट फॉर द रेफरेंस. सो बेसिकली दिस इज एन ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव. इट एम्स टू प्रोवाइड द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जिससे पता चले कि कोरल रीफ और कोरल इकोसिस्टम का क्या स्टेटस है. दिस has a network of scientists, managers, and basically it monitors the conditions of corals throughout the world. The main idea, the main feature of this institution is to publish a report that is on the status of coral reefs of the world report, जिसके बारे में हमने ये फैक्ट निकाला है. It includes the global database
और 1978 से 2019 तक के डेटाबेस के ऊपर इसने काम करा एंड देन इट हैज गिवन सच फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि 14% का लॉस हम देख चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स. So this is about this. Now another, when we know that there are threats to coral reefs, उन threats को identify करना is important. कुछ threats ऐसे होते हैं which are multi-pronged, कि वो एक रीजन की वजह से नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेट है या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से थ्रेट है या कोई और भी रीजन है. तो देयर आर मल्टीपल थ्रेट्स, बट हम कुछ थ्रेट्स को डायरेक्टली काउंटर कर सकते हैं, कुछ को अगर हम दूसरे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें तो काउंटर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो थ्रेट है उसको काउंटर कर सकते हैं. सो वी हैव गॉट हियर द one fund which is for coral reefs. It is a $500 million fund. It is a blended finance instrument basically which tries to mobilize both action and resources to restore and protect the coral reefs. It has got one window as grant window, another window as investment window. This blends both private and public funding and support the businesses and finance mechanism. Further, this fund, global fund for coral reefs, has a dual focus. First, it looks into the innovative financing, and other thing is that which includes the market-based investment focused on coral conservation. Another focus it has is to unlock the financing with respect to coral reef related climate adaptation. तो यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए इट टेक्स फॉरवर्ड अ स्टेप. और उसमें ये क्या इनकॉर्पोरेट करता है? इट इनकॉर्पोरेट ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि एग्जिस्टिंग फंड है. इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोलॉजी. अडेप्टेशन फंड को इन्वॉल्व करता है ये, प्लस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है उनको भी इन्वॉल्व करता है यहाँ पर. दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो कई सारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNEP, UNDP एंड UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड एक्सेट्रा, इन सब से मिलकर ये बनाए. आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, जिसमें आपको बोल सकते हैं दिस फंड इज द रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हियर दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू. तो कभी कभी आपको ये देखना होगा कि वो पूछ क्या रहे हैं. इफ दे आर आस्किंग कि केवल यूनाइटेड नेशंस का ही प्रोडक्ट है, देन स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. अगर इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट और वन ऑफ इट्स promoter is United Nations, then it will be true. तो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है. These information can be asked. यहाँ पर आपको all the pointers, point number 1, 2, 3, 4 and 5, ये 5 पॉइंट के ऊपर यूपीएससी कोई भी एक स्टेटमेंट उठाकर पूछ सकती है with respect to this fund. So you have to be ready accordingly. So with this, we almost finished the coral reefs and the oceanography portion. So here I would like to end the oceanography, and from the next lecture onward we will be discussing some part of ecology, static portion. Then we will discuss about the Indian geography and biogeography also. So environment, ecology and geography, ये जो portion है, these are interrelated. These will be taken all together. So till then, thank you very much.